Hey, what is good, everybody? Welcome back to another episode of Tech. First of all, thank you very much for tuning in, and I hope you guys are having a fantastic day. Today is a very special day, man. I've got a very beautiful box right beside me. थंबनेल और टाइटल से आपको शायद पता चल ही गया होगा. So आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग ऑफ the Tamron 35-150 f2.8 lens, currently considered as the probably the best all-rounder lens for the Sony mirrorless system. So yeah, I've got that for you. So we will be unboxing that. I guess I can go ahead and start now. चलिए start करते हैं. I've got a big camera here. I'll start that. So I just want to show you close up. Let me go ahead and start that. Let's go ahead and start. Box. As you can see here, I've got my unboxing knife. Okay. That looks beautiful, man. Okay, there's one more box, special one. I'll talk about this in the next video. Okay, let's go to this one. This is beauty we were talking about. Okay, I'm gonna keep this box this side. Too much stuff. जैसे कि आप देख सकते हो Tamron 35-150 f2 E-mount, कुछ specs है. So yeah, let's go ahead and unbox it. It's already looking very beautiful. 2 years India warranty यहाँ पे है. Yeah, let's go ahead and open it now. हाथ कांप रहे हैं भाई. By the way, it's quite an expensive lens. I didn't tell you of the price. आपको शायद अगर आप परचेज कर रहे हो तो प्रॉब्ली इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1.64 अमेजोन से 1.64 लाख. मुझे ऑफर में लिया मैंने तो मुझे थोड़ा सा कम पैसा में मिल गया था. सो या दिस आर द कंटेंट ऑफ द बॉक्स. लेट्स मी शो यू. मैनुअल है, serial number, and some warranty card. As you can see, manual is this one. I don't know what is this. Precaution safety for Tamron lenses, kind of a manual only. So yeah, let me go ahead and unbox this one. Ta-da! हाथ कांप रहे हैं भाई. Let's keep this box here. Okay, you guys can see now. Take this out. Take this out. ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बचपन का सपना पूरा होगा. I've been wanting this lens from the time it released. अब saving करके I'm purchasing now. Looks very beautiful, man. ये metal है. No, I guess it's plastic build. I'm gonna have to explore a bit more on that. But yeah, जैसे I'm holding it in the hand, काफ़ी strong. I mean, obviously it's quite heavy. I knew that before buying it. It's gonna be a heavy lens. And it's not image stabilization नहीं है. अगर वो image stabilization डालते तो शायद और बल्कि हो जाता. But my camera body supports image stabilization, so that's good. And yeah, जैसे हाथ में पकड़ रहा हूँ, solid feel है एकदम. काफ़ी प्रीमियम फील है, काफ़ी प्रीमियम फील हो रहा है. लाइक बिल्ड क्वालिटी इज़ वेरी प्रीमियम इवन दो इट्स प्लास्टिक. आई बिलीव इट्स प्लास्टिक. आई एम जस्ट गोना हैव टू एक्सप्लोर अ बिट ऑन दैट. बट यार काफ़ी प्रीमियम प्लास्टिक है यार. देयर यू गो. इट्स योर फ्रंट फिल्टर. आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी इट. शी लुक्स ब्यूटीफुल. या यहाँ पे आपके कुछ कस्टम बटन है. 3 कस्टम बटन आते हैं. ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस स्विच, एंड अगेन 3 कस्टम स्विच, एंड वी गॉट अ लॉक बटन हियर. आई विल टॉक अबाउट दिस इन माई कंप्लीट रिव्यू. दैट्स अबाउट द अनबॉक्सिंग गाइज. आई तो एम सुपर पम्प्ड. So as I said before, it goes from 35-150 and f2 to 2.8. I believe f2 रहेगा 35-40 and the moment you reach 40 mm focal length जाएगा f2.2, which is great यार. 35 में आपको somewhat wide angle मिल जाएगा. It's not ultra wide but it's still wide angle. And 150 में आपको proper telephoto zoom मिल जाएगा. So yeah, I love the range, and again the aperture is really good. It's f2 to 2.8. Again, super excited, man. It's a heavy lens. As you can see, this is the size. So I will be testing this on my camera
सो या अगर आप इसको परचेज करने की सोच रहे हो, जस्ट वेट फॉर 2 weeks यार, 2 to 3 weeks. I will do a thorough test on this and I will clear all of your doubts. If you have any doubts, please put them in the comment section. I will be, as I said, I'll be testing this thoroughly in the next coming 2 to 3 weeks, and I will upload a full review of this. You can expect all sort of testing from me, be it autofocus ho, chromatic aberrations ho, color fringing ho, distortion ho. So yeah, I'm going to do all those tests. Keep in mind, I have Sony A6600 body. I don't have a full frame because सारा पैसा मैंने इसमें डाल दिया, so I don't have any money to buy full frame right now. But yeah, मैं टेस्ट करूँगा इसको A6600 पे, which is a crop body. A6600 is also a very capable camera. When I was buying that camera, मेरे पास दो options थे. Either I could have gone for A7 III और A6600. मैंने दोनों टेस्ट किए हैं. मुझे एक्चुअली A6600 का ऑटो फोकसिंग सही लगा, एंड प्राइस डिफरेंट भी ज़्यादा नहीं था यार. दिस वाज कॉस्टिंग मी क्लोज टू 1.1 lakh एट द टाइम आई वाज बाइंग, एंड A7 III वाज क्लोज टू 1.3 3.5. ऑफलाइन में आई वुड हैव गॉट इट फॉर चीप फॉर श्योर. बट या, दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी केपेबल कैमरा. मेरे को इसका ऑटो फोकसिंग A7 III से भी अच्छा लगा. येस, इट इज़ अ क्रॉप बॉडी, बट या इसका ऑटो फोकसिंग अगेन मेरे पर्सनल टेस्ट के हिसाब से इसका ऑटो फोकसिंग इज़ बेटर देन A7 III. दैट्स व्हाई आई चोज दिस वन. सो मेरे सारे टेस्ट्स होंगे इस पर. सो या, दैट्स अबाउट दैट गाइस. अगेन, एज यू कैन सी, आई एम सुपर थ्रिल्ड. सो या, जस्ट गिव मी 3 weeks. आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, पुट देम इन द कमेंट सेक्शन. 3 week में वी विल डू अ थरो रिव्यू ऑफ दिस वन, एंड आई विल पुट all your doubts, or rather I will clear all of your doubts. Thanks a lot for watching this one, guys. See you in the next. Bye. Camera दूर में, I can't do my punch in. But yeah, see you.